Hello everybody, this is Dr. Nurbat Shah from University of Engineering and Technology, Peshawar. Today video is about measure of dispersion. Measure of dispersion is basically used for data description or data analysis. In last video we talked about mean, mode and other measure of center tendency. तो इसका जो मेन एम होता है वो ये है कि आपने पूरा डाटा को एक नंबर के साथ रिप्रेजेंट करना है। अब क्या वाकई वो नंबर जिसको हम मीन कहते हैं या मोड कहते हैं या मीडियन कहते हैं, क्या वो अकेले में पूरे डाटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता? सो द आंसर इज ऑब्वियसली नॉट। डाटा जो है उस पूरे एक नंबर से रिप्रेजेंटेबल बाज़ औक़ात नहीं होता। तो उसको पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम मीन की बात करते हैं या मीडियन की बात करते हैं तो साथ में हम उसमें उस डाटा में वेरिएबिलिटी की भी बात करते हैं कि उस डाटा के अंदर डिस्पर्शन कितना है, उस डाटा के अंदर स्प्रेड कितना है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअली वी टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू मीन। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम डिस्पर्शन बात करें, वेरिएबिलिटी बात करें मीन के साथ। So what are the measures of dispersion? So जो measures of dispersions हैं, as I said, they are used to measure how far the spread of the data is from mean. जो डाटा आपको गिवन है एज ए होल वो मीन से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, कितना उसमें वेरिएशन है, वेरिएबिलिटी है। For this purpose, we usually use different type of measures. The most simple one is the range. In this case, obviously, we are not using mean and we check a range of the data. We do talk about interquartile range. We talk about mean absolute deviation or median absolute deviation. Collectively, may call it average absolute deviation. The most important ones जो कि usually हम काफ़ी ज़्यादा use करते हैं, that is the variance and the standard deviation. So I'll be talking about these measures one by one, and the main focus would be on variance and standard deviation. I'll talk about variance and standard deviation. How do you find them? By using a scientific calculator directly. Okay, so let's talk about some types of measure of dispersion. We usually classify these measures as absolute measures and relative measures. If we talk about absolute measures, so range, quartile deviation, mean, absolute deviation, standard deviation, or variance, they are absolute measures. They can be used for comparing two data in a same dimension, but if the dimension of data changes, if you want to compare two different type of data, let's suppose in one type of data, the dimension, the unit, that is kilogram, that's the weight, whereas in the second type of data, if we are given prices. So prices might be in rupees, they might be in dollars, they might be in any other unit. So उस केस में हम दो different datas को compare नहीं कर सकते by using absolute measures. So in that purpose we do need some relative measures as well. तो उसमें है coefficient of variation है, coefficient of quartile deviation है, और coefficient of mean deviation है. We do talk about coefficient of those measure of dispersions. So this is the motivation for using or for finding or for this studying measure of dispersion. In the given data, you see we are given scores or marks of two different students in 8 different subjects. Okay, and if you check the mean of that, so the mean for the first data or the mean for the Mary scores, that is 56. You may pause the video and you could find the mean, which could be found as adding all these numbers and dividing them by 8, because we are having 8 subjects, so sum of these numbers and dividing by 8, which gives you 56. Whereas the second student, Tom, who's got these marks, right? So the mean of this data is also 56.
Now you see we have a data of different nature in both cases, but their mean are same, which means we cannot make any decision, any prediction based on or any conclusion based on the mean, because we are having a different type of data. In one type of data the spread is too much, whereas in the second type of data the spread is not that much, but the mean is what? That is 56. That's same. So you see the Marys and Toms both have a mean marks of 56. Can we observe anything from the mean here? Obviously not, because marks of Tom are much more spread out those of Mary. So the mean in this case is not properly representing the given data. So that's why measure of dispersion will come into play, जिससे हम मीन भी बताएंगे और साथ में उस डाटा में कितनी डिस्पर्शन है, उस डाटा में कितने वेरिएशन है, वो भी साथ में बताना ज़रूरी होता है. So the first measure of dispersion, which is the most simplest one, and even though this measure can be used for those audience which are not that much aware of or used to statistics. So the range is simply the difference between the maximum value and the smallest value, which is usually denoted by the symbol R, right? And that's the highest value minus lowest value. Let's consider an example for a certain manufacturing company. Let's suppose the salary of their employees are given, like the owner is getting a salary of 100,000, whereas the smallest value in this case is the salary of a worker who is getting $15,000. So range in this case is what? That is $85,000, because the maximum value is $1,000, whereas the smallest value is $15,000. So if you take the difference, that would give you $85,000. If you talk about the relative measure in this case, that's the coefficient of dispersion. So coefficient of dispersion is the ratio between the range and sum of the smallest value and largest value. So we can write coefficient of dispersion is R divided by xm plus xs, where xm is the maximum value, the largest value, where xs is the smallest value in the data. If you consider this data, the marks obtained by 9 different students in a certain test, they are given as 45, 32, and so on. Now, if you want to find range of the data and coefficient of dispersion, it could be found easily. In this case, the maximum value is 48, whereas the minimum value is 32. So xm minus xs will give you 48 minus 32, that is equal to 16. So range of this data is what? That is 16. And if you want to find the coefficient of dispersion, the coefficient of dispersion is explained above, that it is the ratio between the range and the sum of the maximum at smallest value. So we can have R is 16, whereas xm, as we have discussed earlier, that is 48. The smallest value is 32. So in this case, the coefficient of dispersion is 0.2. But the issue with the range is what? These values are always affected by the by outliers, by the values of x. So the use of this measure of dispersion is very limited. If the data has some outliers, the largest value and the smallest value, if they are very big or very small, and the rest of the value, they may not have that much dispersion, that much variation. लेकिन जब हम उसका range find करेंगे, तो the range will be that much big. लेकिन range असल में उतना dispersion उस data में उतना होता नहीं है. So coefficient, this type of measure of dispersion is usually affected by what? By the outliers. So we move towards quartile deviation. The next measure of dispersion is, that is quartile deviation. We do call it semi-interquartile range.
It's clear from the name that we will be using two quartiles, Q1 and Q3. After arranging the given data and then finding its first quartile and second quartile, what would this quartile do? Basically, they push the maximum and the minimum values to the right and left accordingly. और फिर हम क्या करते हैं? We take range of quartiles. That means you need to subtract Q1 from Q3, जिसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि जो आउटलेयर्स हैं वो तो या लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे या राइट साइड पे चले जाएंगे, तो वहाँ से हमारे पास जो आउटलेयर्स हैं वो इसको इफेक्ट नहीं करेंगे. So we can define quartile range. We do call it semi-interquartile range, that is Q3 minus Q1 divided by 2. Because we are neglecting 50% of the data, so that's why we would divide that by 2. It's not just like Q3 minus Q1. It would be Q3 minus Q1 divided by 2. Whereas coefficient of quartile deviation will be the ratio between these two quartiles, difference between these two quartiles and sum of the quartiles. That is Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. This is the coefficient of quartile deviation. If you want to find marks obtained by 9 students, the example discussed earlier, these are the data points. The first step is you need to sort the data from ascending to in ascending order. You can do that in descending order as well. Now the first quartile of this data is what? That is the n by 4th, and the third quartile will be 3n by 4th observations. Because n by 4 is non-integer, so therefore we will be having 1 quartile, and 3n by 4 is also a non-integer, so we'll be having again 1 third quartile. So in this case, Q1 and Q3, they are 36 and 45 respectively. What is the procedure of finding these quartiles? It's a very simple procedure. अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो वहाँ से आपको इसका आइडिया हो जाएगा. So the process is that in this case हमारे पास जो n है वो that is equal to 9. Okay, so we divide this n by 4 and take its least integer value. That is 9 divided by 4, which will be simply 3. 9 by 4 is 2 point something, but we just take 3. It's a least integer function. So we'll be considering third observation once the data is sorted. So that's our Q1. Similarly, to find Q3, what do we do? Instead of considering n by 4, we take 3n by 4. That is 3 multiplied by 9 divided by 4, which will give you what? 39, 9 3s are 27 by 4. That is 6 point something, so we'll be taking the 7th value. So if you count the value here, 32, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So the 7th observation will be the third quartile. So that's why we are having 36 as our first quartile, whereas 45 is our second quartile. And then to find the interquartile, semi-interquartile range, we'll be doing what? We'll be simply subtracting 36 from 45, which gives you 4.5. And if you want to find a coefficient of quartile deviation, so that will be 4.5 divided by Q1 plus Q3, which is 36 plus 45. That gives you 0.11. Yeah, this should be, it's not like 4.5, it will be 45 minus 36, that would be 9. So 9 divided by 36 plus 45, that would give you 0.11.
इन बोथ मेजर ऑफ डिस्पर्शंस वी डिस्कस्ड अप टू नाउ, जिसमें हमने रेंज की बात की और इंटर क्वार्टाइल सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात की है। हम यूजुअली जब डाटा प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम मीन की बात करते हैं और साथ में उसकी डिस्पर्शन की बात करते हैं। लेकिन इन दोनों मेजर्स में क्या हुआ, इन दोनों मेजर में हमने मीन का कहीं भी जिक्र नहीं किया। इसलिए हमें एक ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्शन चाहिए जिसमें मीन का भी यूज हो। सो वन ऑफ देम इज व्हाट दैट इज नोन एज मीन डिविएशन। The mean deviation is defined as by taking absolute mean deviation. It could be from mean or it could be from median as well. And then taking its arithmetic mean, which basically means summation xi minus x bar absolute for I is equal to 1 up to n, and then divide that by n. Right, so it's the average deviation with respect to mean, whereas the average deviation with respect to median, you have to subtract median from every observation and then take it absolute. Once you have done that, then sum them up all the values and then divide that by n to get accordingly mean deviation from mean or mean deviation from median. और उस केस में हमारे पास डाटा रॉ फॉर्म में होता है। अगर फ्रीक्वेंसी डाटा है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में पहली बात तो यह है कि अगर ग्रुप डाटा है तो उसमें हमें पहले मिड पॉइंट फाइंड करने होंगे। इसमें एक्स आई जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मिड पॉइंट्स को, x bar with the corresponding mean. In this case, we take difference of mean from every observation, which would be the midpoint of classes, and multiplying, taking absolute and multiplying by corresponding frequency. And then we take their sum divided by summation of fi, which is usually is considered as n. And in case of median, you will find median first and then take difference of median from every observation, take its absolute and multiply by corresponding frequency every time, and then take their sum divided by summation of all frequencies. We do talk about relative absolute mean deviation, so that is coefficient of mean deviation, which is the ratio between mean deviation from mean divided by x bar, and we can have coefficient of mean deviation if we talk about deviation from median. So it will be mean deviation or average deviation from median divided by median. If you consider same example as have done for semi-interquartile range, the marks of certain student in different tests is given as, in this case the mean of the data is 40, whereas the median is 39. So if you want to find the mean deviation, for that purpose obviously we need this table. ये हमारे पास x की values हैं, we have taken that or we have just put them in first column. In the second column we take the difference of every observation from its mean. So that is basically x minus x bar, right? So we have 45 minus 40, that is 5, 32 minus 40, that is minus 8, and taking corresponding absolute as well. Similarly, taking difference of median from every observation and then taking its absolute. Once we have found all these values, what would we do? We would take sum of these numbers, not these numbers. This sum should be 0 because sum of mean deviation is always 0. So this sum will be 0, this sum is 40, whereas this sum is 39. Dividing both sums by 9 to get the mean deviation and corresponding median deviation. And if you want to find coefficient of mean deviation, in that purpose what do? We will be dividing 4 by 4 by corresponding mean, which is 40, or by corresponding median, which is 39. The next most important measure of dispersion, that is variance and corresponding standard deviation. If we consider population data, in that case the variance is denoted by sigma square, and that is sum of x minus mu square, where mu is the population mean, divided by capital N, where capital N is representing the population size. And standard deviation is simply the square root, positive square root of variance.
So we could write this the population standard deviation is summation x minus mu square divided by n, and then taking square root. If you talk about sample data, in sample data we denote that by S square for variance, and for sample data we use S. We usually consider two types of sample variance. One is summation x minus x bar square divided by n minus 1, which would be an unbiased estimator. Okay, if you divide it by n, that would become an estimator, but that will be a biased estimator. And degree of freedom of this type of variance is what? That is uh, uh, degree of freedom is n minus 1. Similarly, if you go for standard deviations, the standard deviation is a square root, positive square root of the variance. So it is summation x minus x bar square divided by n minus 1, and then we take square root. If we talk about the relative measure of dispersion, so in this case it is coefficient of standard deviation, which is the ratio between standard deviation and corresponding mean. And we also use coefficient of variation as well. The coefficient of variation is the percentage of the coefficient of standard deviation. That is standard deviation divided by mean multiplied by 100%. Let's do some examples for finding these variance and standard deviation. The same example we discussed earlier. The mean in this case that is 40. So we're taking difference of mean from every observation, which is 5 minus 8 minus 3 and so on. And to find the variance of this data, what do? We'll be taking square of all these observations. And then we add them together. So we have summation x minus x bar, that must be 0. As I explained earlier, there is a property that sum of mean deviation is always 0. So this will be 0. Whereas this is giving you 232. So 232 को divide करना है किसके साथ? The number of observations, which are 9. Right. So divide this 232 by 9 to get the variance, and then its square root will give you standard deviation. So variance in this case is what? That is 25.78, whereas standard deviation will be square root of 25.78, which is 5.08. If I explain this by using a calculator, how do we do that? So let me open the calculator for you first. Keep in mind, we are having now the calculator will be in the math mode. If you see math here. So first we convert this into statistics mode, which could be done by pressing this key. That's a mode key, and then we press 3, which will basically convert the mode into state mode. Let's talk about the first one. So we have this 1 here, and that is in state mode. So it will be asking about the data. So I'll just give the data there. That is 45 is first given as. So 45, the next data point is 32. I'll just input 32. I just made 34. I just change it. 32. The next one is 37. Right. So we have 46 as well. 39 as well. 36. It's 41. It's 48. 36. It's 36. So that's the data with us. Once we have entered the data, then you simply press this AC just to do something else with it. Now, if you want to find arithmetic mean of this data, so we could go for something shift, and then you would see this state here. So press 1. Now, if you want to find sum of this data, that could be simply found by pressing 3 here. So if I press 3,
it will ask you whether do you need summation x or do you need summation x square. But at the moment we are interested in summation x to find the mean. So summation x is what? That is 2. So I'll just press 2 and then press equal. So it will give you what? 360. If you want to find the mean in this case, so for mean what do? We'll just divide this by 9. So this is divided by 9 because n is 9, so it will give us the mean, which is 40. Even though you can find the mean like that as well, if you go back and then press this one and you say I want to find these quantities, so I just press 4. It say what about this x bar? So I'll just press 2 and that press equal, so it will give you 40. तो ये डायरेक्ट भी फाइंड कर सकता है और इस तरीके से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं. अगर हमें वेरिएंस चाहिए तो I'll just press again shift and then press this button and then I just press 4. अब इसमें आप देख लें हमारे पास एक सिग्मा x होगा, एक sx होगा. ये हमारे पास जो ये स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए है. तो अगर मैं 3 को प्रेस करूंगा तो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे ये वाली वैल्यू देगा. That's 5.077 which could be written as 5.08. ये मुझे डायरेक्ट फाइंड करके देगा. लेकिन अगर मुझे सैम्पल मीन स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए तो उसके लिए फिर ये क्या करेगा? यहाँ पे हमने इसको n से डिवाइड किया हुआ है. वी विल डिवाइड इट बाय n-1 देन. तो डायरेक्ट हम वहाँ से कर सकते हैं. लेकिन समटाइम्स हमें ये फार्मूलाज डायरेक्ट यूज़ नहीं करने होते. हमें यहाँ पे ये सब चीज़ें फाइंड करनी होती है. अब यहाँ पर कैलकुलेटर जो है वो x माइनस एक्स बार स्क्वायर को कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर सकता. आपको मैनुअली करना होगा. तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है. तो उस शॉर्टकट मेथड को आपने समझना है. एंड दिस इज अ शॉर्टकट मेथड which could be obviously it's a very simple concept. We know that variance is defined as summation xi minus mu whole square. If I go to the presentation mode, so we want to find the variance, where variance is defined as summation xi minus mu whole square divided by capital N. तो पहले हम इसको simplify करते हैं. By using square formula इसको हम लिख लेते हैं xi square minus 2xi mu plus mu square. और फिर ये समेशन अंदर अप्लाई हो जाएगा. तो दैट वुड गिव यू समेशन एक्स स्क्वायर दिस वन माइनस 2 टाइम्स म्यू बाहर आ जाएगा समेशन एक्स आई बिकॉज म्यू कांस्टेंट है एंड दिस इज प्लस समेशन म्यू स्क्वायर. यहाँ पे हम n को मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं ताकि इसको भी हम कन्वर्ट कर लें किस चीज़ में? म्यू में. मीन का फार्मूला अप्लाई हो सके. और यहाँ पर ये म्यू स्क्वायर कांस्टेंट है तो म्यू स्क्वायर को अगर हम n टाइम्स 8 करेंगे सो दैट वुड गिव यू n टाइम्स म्यू स्क्वायर. अब ये अगर आप देख लें तो ये मीन का फार्मूला है तो इस मीन के फार्मूले की जगह म्यू लिख सकते हैं. तो ये फार्मूला बन जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स म्यू अपनी जगह पे आ रहा है, 2 टाइम्स n अपनी जगह पे आ रहा है और एक म्यू यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा म्यू ये है तो ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा. तो माइनस 2n म्यू स्क्वायर प्लस n म्यू स्क्वायर विल गिव यू माइनस n म्यू स्क्वायर. So we have this expression now, summation xi square minus n times mu square, that is equal to summation xi square minus n times mu square. अब फिर हम क्या करेंगे? दोनों साइड को n से डिवाइड करेंगे बिकॉज ये हमारे पास सिंपल समेशन xi माइनस म्यू आ गया. अगर हम फाइंड करना चाहें यहाँ पे इसका वेरिएंस तो दोनों साइड को हमने कैपिटल N से डिवाइड करना है. So dividing both sides by capital N, so it's summation xi minus mu whole square divided by n. That is summation xi square divided by n minus summation xi by n whole square. Because ये वाला n cancel हो जाएगा और यहाँ पर इसके नीचे n आ जाएगा. So this is basically a shortcut method which can be used for finding variance for a certain data without finding mean. ये असल में देखें तो ये mean का ही फार्मूला है लेकिन यहाँ पर mean deviation हम नहीं कर रहे हैं. तो मीन डिविएशन फाइंड किए बगैर अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर को यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं. और ये उस केस में है जब हमारे पास रॉ डेटा होगा. अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेटा है तो यहाँ पे साथ में फ्रीक्वेंसी को भी मल्टीप्लाई करना होगा एंड डिवाइडिंग बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी. So altogether we have the formula sigma square is summation xi square by n minus summation xi by n whole square. ज़हन में रख लिए ये दोनों वैल्यूज जो हैं they can be found by
यूजिंग कैलकुलेटर डायरेक्टली, जो कि हम यहाँ पर वही चीज़ करने वाले हैं। ओके, अगर इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करें ऑन दिस टाइप ऑफ डाटा जो कि ग्रुप फ्रिक्वेंसी डाटा है, फिर इसके बाद मैं करता हूँ कि हाउ वुड यू डू दैट बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, वी फाइंड द मिड पॉइंट्स. The midpoint of every group is what, or class is what, that is the lower class value plus the upper class limit divided by 2. So 65 plus 84 divided by 2 gives 74.5. और फिर इसके once you have found the first one, बाकी जो है वो simple class width के difference के साथ आ रहे हैं. इस class का width जो है वो 84 minus 65 plus 1, that is 20. तो इस क्लास की जो विड्थ है वो 20 है, इसलिए हम यहाँ पे 20 को ऐड करेंगे तो 94.5, फिर 20 ऐड करें एंड सो ऑन. सो द मिड पॉइंट्स कैन बी फाउंड इज इन दिस वे. वंस वी हैव दैट, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको गिवन होती है, तो 9 फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन. सो द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, अगर हम शॉर्टकट मेथड को यूज करना चाहते हैं तो हमें समेशन f इंटू x चाहिए. तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट दिस कॉलम. तो इट्स 9 मल्टीप्लाई बाई 74.5 विच इज 670.5 आ जाएगा. फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सो ऑन, सो वी गेट दिस क्वांटिटी. हमें समेशन एफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो ये इसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी से दे आर बिग नंबर्स, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो मेनली इस नंबर के साथ होता है. नाउ हाउ वुड वी डू दैट वे यूजिंग कैलकुलेटर. तो उसके लिए हम यूं करते हैं कि ये x कंसीडर होगा और ये इसको हम y कंसीडर कर देते हैं. राइट, दिस इज x वेयर एज दिस विल बी कंसीडर एज y. तो हम डायरेक्ट इनको कैसे फाइंड करते हैं, सो लेट मी डू दैट बाय यूजिंग कैलकुलेटर. तो इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले तो हमें ये डाटा एंटर करना होगा, लेकिन ज़हन में रहे इसको हम एज अ x इंटर करेंगे और इसको हम एज अ y इंटर करेंगे. So if I go to this one state, so it will be asking you, I'll just give ask him for data. I just 2, लेकिन हमें basically क्या चाहिए, यहाँ पे साथ में y भी चाहिए. So I'll go back and simply ask it to do something. It's type 1 and I would need 2 types of data, so I just press 2. It says, do you want to clear the memory? So I would say yes. So I'll press equal, so it's clear the memory for me, and then it's give me x and y. ये ज़हन में रखें कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये मेरे पास y होंगे, कंसीडर होंगे, जबकि x जो है वो मेरे पास कंसीडर होंगे एज माय x हियर. बिकॉज ज़हन में रखें आगे हम एफ एक्स स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे एफ एक्स फाइंड करेंगे. तो इधर हमारे पास इस केस में समेशन एक्स वाई चाहिए होगा और समेशन एक्स स्क्वायर वाई चाहिए होगा. So first we input the values, that was 74.5. The next value is 94.5. Next one is 114.5. Next will be 134.5. One 74.5 and then 194.5. In similar way we will be inputting the frequencies as well, जो कि हमने y के फॉर्म में लिए हुए हैं. तो एक 9 हो जाएगा, फिर इसके बाद 10 है, 9 and then we have 10, then we have 17, then we have 10 again, then we have 5, then we have 4, then we have 5 again. And again as I said, इसको आपने सिंपली क्लोज करना है. अब मुझे समेशन एफ एक्स चाहिए और समेशन एफ एक्स स्क्वायर चाहिए. मैं सिर्फ आई एम इंटरेस्टेड इन दीज टू वैल्यूज नाउ, बिकॉज अगर मैं शॉर्टकट मेथड को यूज करूंगा तो शॉर्टकट मेथड मेरा कैसे यूज होगा इस केस में. ओके, सो दैट वुड बी यूज्ड एज, मुझे समेशन जो फार्मूला हमारे पास है, यू शुड रिमेंबर दैट फार्मूला, that is summation fx square divided by summation f, and this is summation fx by summation f whole square.
हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। तो हम इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं और हम इधर से भी कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। Okay, so how can we do that? This is simply we're using calculator. So हमें summation fx square चाहिए, summation fx भी चाहिए. So I'll just press this one and then I just go to states. It asks for sum again. हमें sum चाहिए पहले. So I'll just press 3. तो मुझे क्या चाहिए? As I said, मुझे summation x भी चाहिए, y भी चाहिए होगा. That's this. ये मुझे चाहिए. तो summation y कहाँ पे है? 4 पे है. तो I'll just press 4. So it would give me the value sum of the frequency 60. Then I move to the next one and I ask for sum again. So अब summation xy मुझे चाहिए ये वाला. So I'll just press 5 because summation xy is at 5. तो अगर मैं equal press करूँगा तो मेरे पास 7350 आ जाएगा. अगेन अगर मुझे x स्क्वायर y चाहिए तो सम और फिर 1 प्रेस करें, देन प्रेस 3 और फिर हमें चाहिए x स्क्वायर y, तो 7 को मैं प्रेस करूंगा. तो अगर मैं 7 प्रेस करूं एंड देन प्रेस इक्वल, सो आई विल गेट 97335. अब इनको हम एक साथ में भी कर सकते हैं. अगर मैं वेरिएंस को फाइंड करना चाहूं तो फार्मूला क्या है मेरे पास? ओके, सो इफ आई गो बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, you see this one. So I'll just go to this part. So you see summation f square by summation f मुझे चाहिए. Okay, so I'll just divide this quantity by what? I'll just use brackets. So it's better to use bracket. This one. Then I'll take divide this by summation f. Sum of the frequency जिसको हमने y कहा था. So I'll just shift this one and then go to 3 and summation y, which is 4, and then just close the bracket. Then I go for minus, again using bracket. Now I will go for summation fx, so shift, use this state button again, and then go for 3 sum. I'm interested in summation xy, so I'll just take 5, and then I'll take divided by the same thing, summation y. So shift with this one and then 3, right? And I'm interested in summation y, so I'll just press 4 and then I'll take bracket and then square. Right? So if you press equal, that would give you the variance. You see, this is my variance, which is 1216 gram square. And if you want to find the standard deviation, so what we can do, we just take square root of this quantity. So let me take square root of it. You see, this is my square root. Then I'll take one bracket. This is another bracket and then press equal, which is 34.87 something. You see, if you want to find the coefficient of variation, so we have to divide that by what? This quantity by its mean. The mean is what? That is basically summation xy divided by summation f. This is the mean. Don't use mean from this because it's a bit थोड़ा सा इसमें different concept आता है. तो इसका अगर मैं divide करूँगा तो किस चीज़ से मैं divide करूँगा इसको? I'll just divide that by summation xy by summation y. So I'll take divided by using one bracket and another bracket. Then I'll just go to summation xy 3, summation xy 5 divided by summation y, shift, and then I go to this one 3, and I'm interested in summation y, so 4. That summation y is my sum of frequencies. Okay, and then if I press equal, you can multiply by 100 as well if you want to find coefficient of variation. So we just have 28.46. So you see that there are a lot of things being done directly by using calculator. Okay, I hope it's clear to everybody. मेरे ख्याल में अगर आप प्रैक्टिस करें थोड़ा सा तो और भी आसान हो जाएगा आपके लिए. Okay, and then next is what that is the coefficient of variation. As I've done that, that's the ratio between standard deviation and mean multiplied by 100%.
right? And usually when we want to compare two different type of datas, we do what? हम coefficient of variation को use करते हैं. Coefficient of variation is usually denoted by what? That is denoted by CV, and that is defined as, in case of population data, it is sigma by mu multiplied by 100%. Whereas in case of sample data, it is denoted as S divided by X bar multiplied by 100%. If you want to check whether the data is more consistent, for consistency we will be interested in smaller value of coefficient of variation. But if you want to be interested in variability, more variability, so the high the coefficient of variation means high variability in the data. So higher the value of CV shows higher variability and vice versa, whereas less value of CV shows more consistency in the data. If you want to do this example again, you see we have to find mean of the data, we have to find variance of the data. Once you input these values of X and Y, this will be considered as X, this will be considered as Y. In this case, this Y is not the frequency, keeping in mind. So you'll be finding summation X, you'll be finding summation X square, and then some Y and Y square as well. We'll be not finding X into Y or X square into Y, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये दो डिफरेंट टाइप्स का डेटाज हैं. तो you might have understood how to find these quantities by using calculators. तो मेरे ख्याल में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. And then we find the prices. So you see X bar is 18.4, which represent the price of commodity, and in this case is 211. So you see that यहाँ पर rupees है, यहाँ पे hours है, तो we cannot compare these quantities. Even though if you find the standard deviation, so standard deviation is 7.66, यहाँ पे 78.38 इन दोनों को हम compare नहीं कर सकते, because यहाँ पे rupees है और यहाँ पे hours है. लेकिन जब हम जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तरफ, तो उस केस में हम देख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द प्राइसेस इज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन द लाइफ. इसका मतलब यह है कि प्राइसेस में जो वेरिएशन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द वेरिएशन इन द लाइफ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और व्हाटएवर कमोडिटीज. दोनों में इक्वल वेरिएशन नहीं हुई है. क्वालिटी को इतना इम्प्रूव नहीं किया गया जितना कि प्राइसेस को इंक्रीज किया गया है. We can use the same coefficient of variation for checking the consistency as well. We are having now two football teams, team A and team B, right? And these are the number of matches played by these teams, and these are the number of goals. So team A, they have basically scored 0 goals in 27 matches, whereas team B has scored 0 goals in 17 matches, and so on. If you want to check which team is more consistent by using this data, so the same thing will be done as what we have done in case of previous example. हमने क्या करना है? Coefficient of variation को find करना है. अब ये टीम A के लिए हो जाएगा X की वैल्यूज और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी. ये X की वैल्यूज होंगी और साथ में इनकी फ्रीक्वेंसीज होंगी. बाकी प्रोसीजर वही आपने यूज़ करना है. टीम ए के लिए आपने अलग इन सबको फाइंड करना है, टीम बी के लिए अलग फाइंड करना है. प्रोसीजर वही है कि ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये आपने वाई लेना है. तो यू विल बी फाइंडिंग एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एंड यू विल बी फाइंडिंग समेशन वाई एज वेल. अभी जो मैंने कर दिया बिल्कुल सेम आपने ये प्रोसीजर करना है. And once you have done that, your simple find for team A, we are having, you see in this case, the standard deviation are same, the data types are same, right? Mean तो different है, 1.06 and 1.2 है, लेकिन उन दोनों के standard deviation same है, लेकिन data type भी same है, so we cannot compare them. So if you go to the coefficient of variation, what happens? We are having 123% here and 109%. It means team B is more consistent, because for consistency हम क्या करते हैं, जो coefficient of variation जितना कम होगा उतनी ज़्यादा data consistent होगा. So team B in this case is more consistent. Okay, sometimes we talk about trimmed means or vinsorized means as well. The same thing in variation or variance as well, because if the data has outliers, तो जो typically तरीका हम यूज़ करते हैं मीन फाइंड करने का या वेरिएंस फाइंड करने का,
तो वो उससे एनालिसिस पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। या अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एक डेटा के अंदर क्या आउटलेयर्स हैं कि नहीं है, तो उसके लिए भी हम ये ट्रिम्ड मीन को यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम वेंसराइज्ड मीन को भी यूज़ करते हैं। द सेम थिंग फॉर वेरिएंस एज वेल। प्रोसीजर इसका ये होता है कि हमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ डाटा, परसेंटेज ऑफ डाटा उसे ट्रिम करना होता है, लेकिन पहले अपने डाटा को सॉर्ट करना होता है। यहाँ पे हम यूजुअली बात करते हैं कि जब हम ट्रिम मीन की बात करते हैं तो हम इसके फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल की बात करते हैं कि फर्स्ट क्वार्टाइल से बिहाइंड आपने वैल्यू को क्या करना है, उसको आपने ट्रिम करना है, उसको आपने रिमूव करना है। सिमिलरली क्वार्टाइल 3 के आगे जितने भी वैल्यूज होंगे उनको भी आपने ट्रिम करना है, उनको भी आपने रिमूव करना है। And then the mean and the data of remaining, the mean and variance of the remaining data will be trimmed measures. Whereas in case of insurized measures, what do? We replace the values behind first quartile and third quartiles by first quartile and third quartile. For example, if we have this data, which is discussed quite a few times, so in this data, the quartile 1 was found earlier, that was 36, right? The first quartile, where the second quartile was found as 45. So to find the trim mean, what do? We have to ignore this data and these points as well. And then finding mean of the remaining points, which are 36 to 45. So the mean in this case is 39.6. That is the trimmed mean, which is very close to its original mean, जो कि 40 के बराबर है। इसका मतलब यह है कि इस डाटा में इतने खास आउटलायर्स नहीं थे। अगर इसका हम वेरिएंस को फाइंड करेंगे तो वेरिएंस इज व्हाट, दैट इज 5.5। वेरिएंस से भी इतना फर्क खास नहीं पड़ा, बिकॉज जिस डाटा को हमने रिमूव किया उसमें इतना खास वो नहीं था, वेरिएशन नहीं है लेकिन थोड़ा सा है इसमें। लेकिन इन केस ऑफ वेंसराइज्ड मीन and mensurized standard deviation, what would we do? We would simply replace the first two values, 32 and 36, by 36, because the quartile 1 is 36, right? So replacing 32 by 36, 36 is already 36, whereas the numbers are the data points after 45, they will be replaced with 45 and 45. और फिर इसका मीन हम फाइंड कर रहे हैं जो कि 40 आता है। इसका मतलब है कि इतना खास फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा, वही सेम मीन आ गया। तो इस केस में भी वही चीज़ हमें शो कर रहा है कि इसमें कोई ऐसे आउटलेयर्स नहीं है। और अगर इसका आप स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ा, बिकॉज हमने डाटा को रिमूव नहीं किया बल्कि डाटा को हमने रिप्लेस किया, जिसमें वेरिएशन क्या है आप देख सकते हैं। इन तीनों में ज़ीरो वेरिएशन है, यहाँ पर भी इन तीनों में ज़ीरो वेरिएशन है। तो ऑटोमेटिकली टोटल वेरिएशन पे, टोटल जो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो यूजुअली हम स्टैंडर्ड ट्रिम जो मेजर्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं उस वक्त जब हमें पता होता है कि डाटा में आउटलेयर्स हैं या नहीं है। आउटलेयर्स हैं तो अगर डाटा में आउटलेयर्स हैं तो ऑटोमेटिकली जो मीन्स होंगे वो उसके एनालिसिस को इफेक्ट करेंगे। या अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या डाटा के अंदर आउटलेयर्स हैं या नहीं है, तो उसको भी देखने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए भी या तो हमें प्लॉटिंग करनी होती है डाटा को, या फिर हम इन्हीं मीन्स को फाइंड कर लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इफ़ यस, प्लीज़ लाइक and please subscribe to my channel to get notification once I upload a new video. Thank you very much.